So this question is very important question towards your any competitive exams. The dimension of CV square by Li square is how much? C means capacitance, V means potential, L means inductor, I means current. Okay, so which one is correct answer? We have to calculate. So we know that okay, the energy stored in a capacitor is E equal to half CV square. That means energy stored in capacitor form is half CV square. Okay. So therefore 1/2 is constant. You can neglect it. CV square has the dimension of energy. Dimension of energy. Okay. So dimension of energy. And the second one is Li square. The energy stored in an inductor is E is equal to half Li square. That means Li square also has the dimension of energy. That means this one the dimension CV square is dimension of energy, Li square is also dimension of energy. That means dimensionless quantity is a constant, is a dimensionless quantity. Dimension of CV square by Li square is equal to this one the dimension of energy. Dimension of energy divided by dimension of energy. Okay, so this one the dimension of energy. So that means dimension of energy is m1 L2 t to the power minus 2 divided by, and this one is m1 L2 t to the power minus 2. Dimension of CV square by Li square is equal to, what shall I get, m0 L0 t0. That means your correct answer is option B is correct. Okay, that is very easy question. Okay, पिलाମାନେ ଦେଖ ଏଇ क्वेश्चन केते इजी क्वेश्चन, तो एई टाइप रो क्वेश्चन जे कोनोसी तुमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुची, तेणु याकू तुमको निश्चित जानिबे दरकार जे सीवी अछि माने सीवी जो अछि पिला देखि परछ, ये जो सीवी अच्छी देख पिले ये जो सीवी स्क्वायर अच्छी बाय हाफ सॉरी बाय एल स्क्वायर, तो ये हूँ एनर्जी स्टोर सीवी स्क्वायर हूँ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और एल स्क्वायर जो हूँ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो ये हूँ एनर्जी फॉर्मूला है। तुम्हें सब पढ़ी थी, तेणु या पढ़ले जा तुम्हें कर ना कौन क्वेश्चन एत इजिली सॉल्व करिया तुमको डिफिकल्ट हम। ठीक अच्छे, अनदर क्वेश्चन अच्छे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा। ए पर्सन measures two quantities as A equal to 1.0 meter plus or minus 0.2 meter, B equal to 2.0 meter plus or minus 0.2 meter. We should report correct value for AB स्क्वायर रूट आज कौन होगा।
ठीक अच्छे। तेणु एटा आंसर बाहर करा पे कौन अच्छे देख प्रथम ऑप्शन देछि 1.4 मीटर प्लस और माइनस 0.4 मीटर। ऑप्शन बी अच्छी 1.41 मीटर प्लस और माइनस 0.15 मीटर। ऑप्शन सी देखिए बेले ऑप्शन सी अच्छी 1.4 मीटर प्लस और माइनस 0.3 मीटर। ऑप्शन डी अच्छी 1.4 मीटर प्लस और माइनस 0.2 मीटर। यार आम सॉल्यूशन बाहर करिए। सो ये कौन करिया पिला माने देख लेट x इज इक्वल टू ab ऑफ रूट ओवर। लेट x इज इक्वल टू ab रो रूट ओवर ना नहीं। लेट x इज इक्वल ab रो रूट ओवर देन आम कौन करवा ए रो वैल्यू पुट कर 1.0 बी रो वैल्यू पुट कर देखो ए मीन्स ये फास्ट टर्मटा ए बी मीन्स फास्ट टर्मटा 2.0 रो रूट ओवर आपको सॉल्व कला 0.2 रूट ओवर हम आपको सॉल्व करें जदि 2 रो रूट ओवर के 1.414 मीटर आपको अप्रोक्सीमेटली के 1.4 मीटर नहीं ये राउंडिंग आम कलु राउंडिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर ओके आपको राउंडिंग कले आम ये मिलला है ये जापर ये देख कौन कले राउंडिंग कले राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर मुझे सॉल्व कले। तो या पर आम कौन करवा एब्सोल्यूट एरर पे बाहर करवा ये तो फर्स्ट पॉइंट देख 1.4 1.4 1.4 तीन ऑप्शन अच्छे ता भर कौटा करेक्ट हम तो आम जाना केमती नेक्स्ट आपको एब्सोल्यूट एरर बाहर करवा। तो एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला कौन पे एब्सोल्यूट एरर है एब्सोल्यूट एरर हो डेल एक्स आम एब्सोल्यूट एरर कौन बाहर कर डेल एक्स बाई एक्स इक्वाल टू कौन आसो ये जोटा लिखी आर आम लिखिद हाफ इंटू डेल ए बाई ए फर्मूला पे ये फर्मूला अच्छे डेल बी बाई पी है तेणु ये केते बी केते सी केते आम लिखा ये तापर परसेंटेज ऑफ एरर आम बाहर करें ओके। तेणु ये कौन अच्छे पे देख एक्स देती केते 1.4 मीटर ए अच्छी केते 1.0 मीटर डेल ए इक्वाल टू केते अच्छी 0.2 मीटर बी इक्वाल 2.0 मीटर मो मन को लिखुनी ये देखिए लिखुची डेल बी केते अच्छी पे 0.2 मीटर अच्छी ना डेल बी 0.2 मीटर। तो ये आम इक्वेशन पुट करद डेल एक्स डिवाइड बाई केते 1.4 ये को एक्जाक्ट वैल्यू पुट करवा ये इक्वाल टू हाफ इंटू डेल ए हूँ 0.2 बाई 1.0 प्लस हाफ इंटू डेल बी हूँ 0.2 डिवाइड बाई 2.0 तो या आम सॉल्व कले के पे हाफ इंटू या सॉल्व कले 0.2 प्लस हाफ इंटू या सॉल्व कले 0.01 नहीं जो 0.1 हो 0.1 हो ठीक अच्छे। तो नंबर डेल एक्स केते डेल एक्स इज इक्वल टू बाई 1.414 या सॉल्व करवा कट कले केते 0.1 यहाँ को आम सॉल्व कले 0.05 केते 0.05 ओके 0.05 या को सॉल्व करवा केते 0.15 मीटर हो डेल एक्स इक्वाल टू केते 1.414 इंटू 0.15 या को आम सॉल्व करवा सॉल्व कले केते 0.212 क्लोज टू 0.2 मीटर कहीं ये राउंडिंग अच्छी ना 2 अच्छी 2 हेल्ले कौन क्लोज टू लेस देन 5 अच्छी मैंने 2 हो कौन तो फाइनल रिजल्ट केते पे फाइनल रिजल्ट 1.4 मीटर प्लस और माइनस 0.2 मीटर देखो करेक्ट आंसर कोटा ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर।
पे जापर तेणु ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन डी। तो एमतीका जेकोसी प्रोब्लेम को तुम इजिली सॉल्व कर पारिबो। मेन हूँ प्रैक्टिस, जदि प्रैक्टिस कर पिले जेकोसी प्रोब्लेम तुम इजिली सॉल्व कर पारिबो। ठीक अच्छे। जदि वीडियो भल लगी लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब करिया जमार भूलिबो नाही। अधिक वीडियो देखिए हेल्ले प्लेलिस्ट को जाओ कि कोर्स को जाओ, सेठू बहुत सारा वीडियो मुझे अपलोड कर देइछि, स्टेप बाय स्टेप मते सॉल्यूशन कर देइछि। तुम सेठू बहुत सारा क्वेश्चन जानी पारिबो। और जदि वीडियो भल लगुछि तुमको लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब करिया जमार भूलिबो नाही। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। थैंक यू।